Full. Full, madam. Full. Okay, great. Target पे light दे दो. सारे वही आ रहा फ्रेम में Hello. हाँ दे दिन लग जाएगा हाथ हटाओ दिख नहीं रहा. ओह नाइस शॉट very good center finish whatever Shweta come. She's Shweta from New India. We just. Is this even legal? ट्रस्ट मी कितने सारे लोग यहाँ पर अग्री कर रहे होंगे कि यार जितने भी अगर हमने किसी ने भी यहाँ पर ट्रिप्स लिए है, did all the flashbacks come right in front of you while you were listening to the song? Yes, put your hands up. Yes, too good, yaar, amazing. Okay, so I guess now it's time to call up the duo that has created the magic in this song, and they are none other than the one person who has been stealing hearts and the voice that is in our hearts for, I mean, as long as how many years we cannot even recall, and the one who has been the sensation all around the world for the past few years, and जिसकी आवाज मतलब तुम सुनने के लिए इतने ज़्यादा तरस जाते हो. So ladies and gentlemen, boys and girls, with all the noise, put your hands together for JUBIN, NAUTIYAL and YOHANI! No, it cannot agree more, and I could not relate it more with the trip that we had from Mumbai to Karjat till here as well. And this is a whole new different thing that we did, that it is very unusual. So firstly, what do you have to say about that? You also traveled with both media buses. So if you could just tell me how was it for all of you guys? तो हर बार जब भी आपसे मुलाकात होती है, बहुत छोटी सी मुलाकात होती है, आते हैं मिलते हैं, गाने के बारे में बात करते हैं, और आप हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं, बट हमें आपके बारे में जानने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता. सो आई थिंक टुडे वाज अबाउट दैट. वी एक्सपीरियंस समथिंग इन ले टुगेदर. We had a good time, and we thought, since we are promoting the song together, so maybe we can all experience a little bit of that together by coming here. And everybody needs to get out of your space and kind of just take a trip off sometimes. Great. Sir, would you like to add on something? Well, hello everyone. So, what about you want to ask about the music video? How did it go? Like, I asked you about the trip that we had so far from Mumbai to Karjat, okay, along with everyone. Not even close. Trust me. The only part was that when we went to the wrong side, Right. the side. That was quite similar, but trust me, it was quite very hard work. Like सबको जल्दी उठना पड़ता था, and 5 घंटे drive. Then you have to perform, and the rest of the crew. But if you decide it, you do it, isn't it? True. And kudos to whole team जिन्होंने पाजी ने कहा कि नहीं कर लीजिए decide. मैं कहा पाजी, let's do it on the other side. It was like 18,000 feet altitude. My God. And trust me, we lived in tents and no heaters. No heaters. No heaters. You're kidding. You're kidding me. My God. Oh my God. Can we have one more mic, please? Yes. Sure. Yes. I was saying that I slept with my jacket on that night because it was way too cold. Jackets and the blankets otherwise also. Everything. Oh, okay. And I was the only one who took bath in the morning. इतनी ठंड थी, but Okay. True that. I think none of us used to wake up in the morning and could have a bath. Honestly yeah. saying, you would go take a bath in the morning. Like as simple as how he took up the challenge of creating something like this, right? Yeah. maybe yeah, but it's all about like. Okay, Paji said we were talking about locations where to film it, and so I was trying to find easier options, and I know he was like indirectly, no, let's do it in Ladakh. Okay. We know, because he knew what exactly he's looking at. Right. Then indirectly, very,
वो समझ गए, बात समझ गए, हाँ, बात वो समझ आंखों में गए, देख के जब वो बात होती है. Yes, exactly. Right, yeah. And we all know, like Ladakh, as we all know, it is the most beautiful place in all around the India. And उसी के साथ सुंदर होने के साथ साथ उसके काफी ज्यादा challenges भी आते हैं, जैसे आपने कुछ यहाँ पर mention कर दिए हैं. So, what were the most extreme challenges you faced throughout the process of shooting it, and while even when you were recording वगैरह? So, were you all prepared for the challenge? And the challenge अगर कुछ आया, you were clueless about how to deal with it. So how did you deal with it then? Well, not completely. We were partially like we were prepared partially. Like we knew what may क्या हो सकता है ना. Then but पारी के साथ discuss किया. Even मैडम को भी clear किया गया कि you're coming from Sri Lanka to that much high altitude, so it could be difficult for you. But हाँ, रास्ते में एक दिन हमारा खराब हुआ, बस totally खत्म हो गई. Then we have to replace it with another bus. So that sort of challenges, but I think it's part of making a film. Absolutely, and so everyone सबने साथ दिया तो वही हो पाया, क्योंकि otherwise जैसी locations पे जाके ये shoot हुआ है बहुत hard होता. So Yohani, like as he mentioned, Sri Lanka to Ladakh to Leh. So how was that change, that sudden change for you? How did you deal with it? Yeah, I keep asking everybody. There's a whole India, like a very big area of India, and you guys chose Ladakh to shoot. And this was my first ever video Right. in India. Right. And Your first single, if I'm not wrong, Yes. in Hindi music industry. yes. Wow. So I keep asking him why, and he has an answer for that. Because since you've seen Ladakh and you've experienced Ladakh, now you can literally go anywhere in India and shoot. That's true. It has made you very, very tough now. So all the challenges that will be coming up will be very easy. Yeah, Now, but, Jubin, but it was good. It was we managed. We're still alive. yeah. Oh, But you it was guys nice. are pretty much. Okay, so Jubin, I had one very curious question for you in my mind. So every time we've seen many of your music videos, and I am a very big fan of your music. And whenever I listen the first song that comes, wherein if you remember one concert of yours, "Tujhe Kitna Chahne Lagega," man, that is one of my most favorites. So now in this video, when I saw you in a different look altogether, with a different hairstyle and everything. So how did you did it was you who thought of getting into that zone? Yeah. How did that come up in your mind? So I think so I'll just go a little bit, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने और नवजीत पाजी ने बहुत सारी वीडियोस साथ में Right. शूट करी हैं. लॉकडाउन में मतलब लिटरली हर 1-2 महीने में हम लोग कुछ शूट कर रहे होते. Correct. और हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी साथ में, काफ़ी स्टोरीज जनरेट करी. वी मेड पीपल लाफ, वी मेड पीपल क्राई, वी मेड पीपल ट्रैवल विद अस थ्रू डिफरेंट लाइव्स एंड डिफरेंट म्यूजिक्स एंड जर्नीज. तो एक ऐसा वक्त आ गया था जब पाजी और मैं हम बैठे थे, हम सोचे थे कि क्या कुछ हमको करना है. वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग. कहते ना कि कुछ चीज़ें आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. एंड वी वांटेड टू डू समथिंग दैट वी वांटेड टू एक्सप्रेस. कुछ Right. बस पाजी कुछ ऐसा शूट करना चाहते थे जो समथिंग दैट ही इज नॉट डन बिफोर, समथिंग एल्स. और मैं भी कुछ ऐसा साउंड करना चाहता था जो मैं पहले नहीं करा था. एंड जब मैंने और रॉकी खन्ना हम लोग साथ में म्यूजिक करते हैं, Right. जब हम लोग ने ये गाना बनाया था, हमें नहीं पता था कि ये एक डुएट होने वाला है. Oh. एक सोलो सॉन्ग था ये. फिर हमारी मुलाकात योहानी से हुई. कहते हैं ना कि जब आप एक बार अपनी मंजिल देख लेते हो तो फिर रास्ता अपने आप बनता एकदम चलता अपने है. आप खुल जाता है. So वो one thing led to another and it was just मतलब बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मटेरियलाइज हो गया. कितनी बार महीने लग जाते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, बट यू नो दिस प्रोजेक्ट रियली वेंट थ्रू वेरी फास्ट. योहानी केम, शी हर्ड द सॉन्ग, शी लव्ड द सॉन्ग. उसने पहले दिन आके डब कर दी. आई वाज वरीड कि ये हिंदी में कैसे गा पाएगी, मतलब बयां कर पाएगी बात या नहीं कर पाएगी. But she was so natural at it. She came, she dubbed. Most of the sections that we're hearing in the audio today are from the first dub. जो शायद हमने एक ऐसी हॉल में बैठ के करी थी. So मुझे लगता है आर्ट के साथ ही कुछ ऐसा है कि वो मैं मानता हूँ हम लोग की क्या हैसियत है, हम कहाँ आर्ट बनाएंगे, तो ऊपर से आती है, हम सिर्फ जरिया बन जाते हैं उसका, और रास्ता एक एक करके जुड़ता है और मंजिल तक पहुँच जाते हैं. This was meant to be. I think this was something that was supposed to be, and I'm so happy that we are all getting to celebrate it together here like this again. You know, everything with this project. Tell me, एक दिन से फर्स्ट डे से बताता हूँ, हर चीज़ इतनी स्पेशल रही.
हमको 5 दिन शूट करने का मौका मिला, हमको पूरा ले ट्रैवल करने का मौका मिला. एंड हम जब ले में थे, मी एंड योहानी, वी मेड अ न्यू सॉन्ग देयर दैट विल आल्सो हैपन नाउ. Wow. एंड व्हेन वी वर शूटिंग इन ले, बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं पाजी, तो खैर बट पाजी को आदत है, मुझे भी आदत है, हमको अपने से ज़्यादा डर इसका लगा हुआ था कि बेचारी छोटी सी, ये कहाँ से इसको हम लोग बचाएंगे अगर इसको ठंडी वंडी लगी थोड़ी. बट आई थिंक इट जस्ट sailed through very smoothly, and I'm very, very proud of what we've made today. It's not the usual kind of stuff that we do, and I love the fact that you guys are loving it, and I love the fact that the country is loving it. Yeah. Truly, yeah. Everybody, please give a huge round of applause for this, Anand. Okay, now, Yohani, coming back to you. You have performed with JUBIN pehle in the song Money Ke, which was a global blockbuster, and that was also the song that, you know, for me, it was the first song that I heard for you, and trust me, uske baad se the voice of yours is in my mind and in my heart. So, from that song to this zone, how was the transition for you, and how do you think you guys get along as performers in, like, you know, songs? Yeah? Well, from Manike to SAMNE, there has been a really long journey in between, I think. To start with, I've moved to Mumbai now. Correct. And working with him has been amazing. Wow. I mean, you're the first artist that I met in India. Yeah. Woo! Yes, I still remember at T-Series. And from that to this, we've worked on so many songs now, and we've learned from each other a lot. I've learned. I don't know about you. I've learned too. But it has been a great journey, and we are working on some other projects as well. So looking forward to those. Absolutely, I guess not just you guys, me and all of us are looking forward. Am I right? Yes, yeah. So those were the questions that I had for you guys. Now, before I hand it over to the media for their questions, there's this one little segment that I want to do it with you guys, and the name of this segment is called as Put Your Finger Down. So can I have your one hand up in the air, all three of you guys? Yeah. And these will be just 5 quick questions that you guys have to quickly answer. If you have ever done that, you will be putting one finger down. And yeah. So put your finger down if you have ever been on a solo trip, other than, like, you know, anything for the work. On a solo trip. Yeah. Put your finger down if you have ever found some great company, some great friends while on any trip of yours. Yes? Okay. Put your finger down if you have ever decided not to shower while in Leh Ladakh. Okay. Put your finger down. थोड़ा मन था कि ना हो. थोड़ा मन था. Correct. Honest जवाब दे रहे हो. Honesty के लिए आपको points मिलेंगे. Okay. Now, put your finger down if you would leave everything to travel the rest of the world in an RV for the rest of your life. In an RV, a road trip, for the rest of your life. Never. Never. It's not practical. I see the reaction. देखिए अति का जो है अंत हो जाता है. अगर इतना ज़्यादा आर्मी में ट्रैवल करेंगे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा. मजा नहीं आएगा. Correct. And last but not the least, put your finger down if we would be seeing this team in many more upcoming projects like this. Yes? क्या बात है यार. Okay. So once again, give it up for the crew, everybody. यार. Amazing. Now I open up the stage for the media personals to bring in your questions. Yes? Hi, good evening. Mayur here from Beyond Bollywood. Some people will have to make way, please. You are not opaque. Hi. Hi, Yohani. Hi, JUBIN. Obviously, I got a side view of the song. I think the first thing I would say, my initial impression is, behind you, we can hear the sound of that stream. It's pure. And then in Leh, that's a beautiful, clear sky. And then it's the tones of JUBIN and Yohani. Thank you. You know, I think that's my initial impression, and I'm like stunned, Yohani, for your first Hindi single. Because initially I was wondering that you might just have, you know, like a couplet or just one odd verse. But it's like both of you, it's a proper duet. I think you briefly mentioned about that. You basically got it bang on in your first dub, but I'm sure it can't be that, you know, all that easy. And there must have been.
there must have been obviously some individual or mental preparation. Would you be able to talk about it? Yes, so the first time, I think couple of the verses that you hear now is from the first dub, but I think the verses we took it separately because Jubin here changed the lyrics a lot of times. So I come prepared to record it, and he's like, so yo, I changed a little bit, and he has changed just the entire words. So I was like, oh, it's cool. So I was like, how am I gonna get it? But he taught me really well, and Prasanna. Prasanna, yes. Prasanna. Prasanna is the guy who's produced the music of the He was amazing. So I think all those elements got together, and here we are now. Obviously, Yohani, you're the Emerald girl from Emerald Isle, and when I look at you, in your young career so far, for a girl who was an accounting graduate, then she moved to singing, she became this singing sensation. And you kind of remind me, I don't know whether you heard of this name, but in the 80s there was this, brilliant singer from Pakistan, Nazia Hassan. The kind of impact she had, on, firstly Pakistani music and then Indian music and global, she became like this pop queen of Asia. And how do you react, if today somebody is to compare you with her and, they tell you that, you are representing Asia at a global scale? That's amazing to think like that. I don't have an answer for that, but I think everyone has their different elements and different journeys. So if you compare, I am so honored, but I think everyone has their separate journeys, and I'm still figuring out my one. It's a little bit cold. अरे बंद कर दो यार. Sorry. Hi, Zubin here. जी. Hi. 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 खैर मैं क्या बोलूँ, एक के बाद एक आपके सॉन्ग्स ऐसे आते हैं, धमाकेदार आते हैं कि बस सुनने की इच्छा हो जाती है, और ब्लू टू एंड दिस लद्दाख एंड दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत सुंदर। आपका हर गाना लोगों के दिलों के अंदर चला जाता है, बहुत समा जाता है। मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी बोल चुकी हूँ कि मुझे आपका ये दिल बार बार कह रहा है मुझको। हाल ही में ये वाला गाना एक सीरियल में भी इस्तेमाल किया गया था। आर यू अवेयर ऑफ इट? एंड कैसा लगता है जब महिलाओं के घर और उनके दिल के अंदर भी आपकी आवाज़ ऐसे सीरियल के थ्रू चली जाती होगी? और गाने के बारे में अगर कुछ कहना चाहें। बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, और दिस सॉन्ग इज बेसिकली ये एक इंडिया और नेपाल का कॉम्बिनेशन रहा। ये सॉन्ग नेपाली फिल्म में मुझे गाने का मौका मिला, और जो गाने के कंपोज़र हैं हमारे उत्तराखंड से पवनदीप राजन हैं। सो आई थिंक इट्स मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं। साथ में काम करना और अच्छा काम करना जो लोगों को पसंद आए, लोगों के दिल में जगह बनाए, आई थिंक दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट लिव्स फॉर। आर्टिस्ट को एक बार अगर ताली लग जाती है तो फिर मुझे लगता है वो ख़राब हो जाता है उसको फिर उसके बाद उसका नशा चढ़ जाता है कि अब ताली चाहिए ही चाहिए, जितनी बार भी स्टेज पे जाऊँगा उतनी बार ताली चाहिए। तो आई थिंक हम लोग सब उसी के सताए हुए हैं, और दैट सॉन्ग इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। लोगों को बहुत पसंद आया वो गाना, रील्स बहुत बनी उस गाने पर डेफिनेटली, और बहुत जल्दी आई थिंक मैं उस गाने को अच्छी तरह से तैयार करके स्टेज पर भी उतारूँगा अपने साथ। सो दैट विल बी अगेन वेरी स्पेशल। थैंक यू। जुबिन, योहानी, पूरी टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। दिस इज सिमरन सिंह हियर। या थैंक यू सिमरन। ओके, मेरा सवाल से पहले मैं कहना चाहूँगा सर, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन किया इट्स ब्यूटीफुल, मतलब वोकल्स तो ब्यूटीफुल है, लेकिन जो पिक्चराइजेशन था दैट एडेड मोर वैल्यू टू द लिरिक्स। थैंक यू। ओके, मेरा सवाल जुबिन आपसे भी है और योहानी आपसे भी है। पहला सवाल मैं जुबिन आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से इसके लिरिक्स है मिल के विचरते हैं, तो ऐसे कोई आपके ट्रिप्स आपके जहन में है जहाँ पे यू मेट समवन एंड वो आज वो बस यादों में है, मे बी वन ऑफ योर सोलो ट्रिप्स और एनी ट्रिप, even Yohani, you can contribute to that. So yeah, I think when we are on a journey, we definitely meet new people. इस गाने के लिरिक्स मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे साथ कंपोज करते हैं रॉकी खन्ना, उन्होंने लिखे हैं इसके लिरिक्स, और उस पूरे गाने की थॉट ही वो है कि प्यार के बिना दोस्ती नहीं मुकम्मल हो सकती, और
दोस्ती के बगैर प्यार नहीं मुकम्मल हो सकता. They have to be together, and only then love and friendship can form something there which could last for a very long time. हाँ, अक्सर हम लोग when we travel it out, जब हम जाते हैं हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो आपके मन में और दिमाग में हर तरह से बस जाते हैं. Probably they become part of your memory line, and every time you hear a song and every time you see a place or every time you remember something will relate you to that person, individual. और अक्सर मुझे लगता है हम लोग मिले हैं. I have met a lot of people on my journey who I could relate to even today, and similarly I would like to give a big round of I would like to mention जो हमारे साथ co-actors हैं इसमें, जो मेरे opposite play कर रही हैं, साक्षी जोशी, brilliant actress again from Dehradun, from the mountains, and Martin from Chandigarh. He's from Bombay. Yeah, he's from Bombay. अरे मैं सुबह से सबको चंडीगढ़ बोल रहा हूँ बेचारे. I'm sorry, Martin. Okay, Martin is from. Agent is from. His agent is from Chandigarh. Sorry. So he's from Bombay, and चार लोग हम लोग साथ में, हम लोग की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही, तो मज़ा भी आया उसको काम को करने में. And Paji, I think Paji also felt very different while shooting us this time as compared to all the other times that he shot. काफ़ी different लगा. So yeah, we've met a lot of people, definitely, and they stay with us. Okay, Yohani, my question is to you. Okay, yeah. You want to add something to this one? No, Okay. Okay, so my question. She's the actual traveler. I think you should ask her. So Yohani, you have to come. She's literally traveling to India and meeting so many new people. Yeah, to share a memorable trip with us. Yeah, I think this trip for me was very memorable because mostly I think more than it being a music video for me, it was about making connections. It was the first time I met all of these guys. It was really nice spending time together and having fun during the shoot. More than a music video, I think for me it's just like a trip. A trip, but someone's shooting it. But it was really nice. I love it. I would do it again. Okay, Yohani, my question to you is ki, how do you look upon to your journey, the love that you are getting from India? It's overwhelming, to be honest. I'm still processing it myself because everything has happened in like a really short time. And now I'm here, I moved here. My life has completely changed its trajectory, so I'm still getting used to it. But India has been very kind to me, so thank you, all of you guys. Thank you. जुबिन साहब, Sir. बहुत अच्छा लगा आपका गाना, और ये मतलब अपने हिंदुस्तान के अंदर और लद्दाख में फिल्माया है, सबसे बड़ी बात है. तो क्या कभी उम्मीद करेंगे कि आगे करके आप देहरादून सिटी या उत्तराखंड की खूबसूरती को किसी एल्बम में लाना चाहें? असल में जो मेरा और नवजीत पाजी का पहला वीडियो था, उत्तराखंड में शूट हुआ था. गाने का नाम था दिल चाहते हो या जहाँ चाहते हो हमसे बता दो कि क्या चाहते हो. मसूरी में हमने शूट करा था, एंड हम लोग सिर्फ मौका ढूंढ रहे होते हैं कब हमें मौका मिलेगा कि उत्तराखंड जाके शूट कर सकें. एक तो घर है, फिर ऊपर से पहाड़ हैं, और थोड़ा सा एक अच्छी लाइटिंग का बहुत स्पेशल स्पेस है वहाँ पर. और पाजी को तो घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है देहरादून शूट करने के लिए. सो आई थिंक डेफिनेटली आने वाले टाइम में फिर कुछ जाकर के उत्तराखंड में शूट करेंगे. कभी सर देहरादून हम लोग देहरादून तो शूट करना चाहता हूँ. देहरादून में भीड़ भाड़ आजकल काफ़ी ज़्यादा, इट्स नॉट वेरी इजी टू शूट इन देहरादून. बहुत कठिनाई हो गई देहरादून में शूट करना. और थोड़ा सा भी देहरादून के लेफ्ट राइट जाएं तो हमारा ऋषिकेश आ जाता है, मसूरी आ जाता है. इट्स क्वाइट स्पेशल टू शूट है. हाँ, लेकिन कभी सिटी लाइफ के ऊपर अगर शूट करना हुआ तो डेफिनेटली देहरादून में शूट करेंगे. थैंक यू. Hi, Shubin and Yohani. Nilima here. Hello. Hi. I love all your songs, Shubin, and Thank this you. one is fabulous again. And Yohani, welcome to India. मैं दोनों को ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों भी ऐसे लगता है कि दिल के मुसाफिर हैं. You are traveler by heart, I feel. So, हाँ यार, सही बात है ये सही बात है बिल्कुल जी. so what is traveling for you both? Traveling for me is about meeting new people, listening to their kind of music, and figuring out their cultures, where they come from. It's just everything is new, and traveling makes you get exposed to things like that.
and I think that's how I listen to most of my music as well, from other people and other people's cultures. So yeah, just exploring. Hello, hello. Hello, Jubin sir. Hello, this is Vinay. Hi, Vinay. Hi. Okay, yes, sorry, yes. I will answer you first, then I'll come to Vinay. I love traveling. I'm a traveler. I was born a traveler. और मुझे लगता है एक बड़ी छोटी सी चीज़ शेयर करूँगा, उससे आपको शायद मेरा एक बहुत हमेशा से मानना रहा है कि अगर इंसान दूर तक देख सकता है और दूर तक सोच सकता है, एंड ट्रैवल करते हुए हमको एक मौका मिलता है कि हम ऐसी जगह जा सके जहाँ हम दूर तक देख सकें। अक्सर हमारे सामने एक बिल्डिंग होती है, गाड़ी होती है, कोई लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग, वी डोंट गेट टू सी दूर तक, वी डोंट गेट टू सी डिस्टेंस। और आई थिंक आई क्रेव टू सी डिस्टेंस। अगर मैं कहीं ऐसी जगह खड़ा हूँ किसी पहाड़ के ऊपर, तो मैं दूर तक देखना चाहता हूँ, एंड जस्ट काइंड्स ऑफ ओपन्स अप माय माइंड in so many ways to think and imagine things. Yeah, I'm a traveler by heart, absolutely. And I think all of us who've made the video, we were all really crazy for traveling. इसलिए इतना मजा उसमें आ रहा है वीडियो में सबको देख करके, including the director of the video. He travels so much more than us, actually. हेलो सर, दिस इज विनय। मेरा सवाल जुबिन सर आपसे है कि आपने काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग्स दिए हुए हैं, काफ़ी लोगों को खुश कर देते हो, काफ़ी लोगों को इमोशनल कर देते हो, तो ऑडियंस से रिस्पॉन्सेज मिलने के बाद किस थिंकिंग को लेके आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाते हो? यार, ऑडियंस का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कितनी बार ऐसा नहीं कि हमने जितने गाने निकाले सारे अच्छे गाने थे, कुछ गाने ऐसे थे जो नहीं पसंद आए जनता को। ऐसा हर बार होता है, काफ़ी बार होता है। कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होती है। तो जो फेलियर्स हैं उनसे ऊपर आने के लिए करेक्ट क्रिटिसिज्म जो है जनता देती है, जो राइट रिव्यू होता है ना, क्योंकि जो बंदा आपके यूट्यूब के नीचे, आपके कमेंट्स में, आपके फॉलो करके आपको लिख रहा है, वो पर्सनली आपको जानता नहीं। आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले तो बोलते हैं अरे बेटा बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया गाना बनाया तुमने। जनता बोल रही है कितना बेकार गाना है, बट घर वाले प्यार करते हैं आपसे, तो वो बोलेंगे हाँ अच्छा गाना बनाया तुमने। बट आई थिंक जनता का जो एक्चुअल रिव्यू आता है, उससे हमें पता लगता है कि किस तरह से हमारा संगीत और हम परसीव करे जा रहे हैं। एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो समझने के लिए मुझे लगता है जनता के साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स टू मीडिया, आप लोग के थ्रू हमें मौका मिलता है एक्चुअली जनता को छू पाने का, उनकी ज़िंदगियाँ छू पाने का। जी, दिस इज कॉल्ड द हिप्पी लुक। पाजी, डू यू वांट टू टॉक अबाउट माय लुक? मैं पाजी के ऊपर डालना चाहूँगा ये पूरा क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज जुबिन, एक्चुअल जुबिन। मतलब बाकी तैयार हो गया, आप वैसे देखेंगे तो एक्चुअली जुबिन दिस इज। Yes, of course. Probably first week of December. Very soon. right there. मेरा क्वेश्चन डायरेक्टर से है, तानु फ्रॉम नवभारत टाइम्स। उनने तो अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसा रहा उनके लिए, बट आपको एक सेटअप बना के दिया जाता है, बट यूजुअली मतलब ये यूजुअल नहीं होता कि आप लेह जैसे प्लेसेस पे जाके डायरेक्ट करें, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? डायरेक्ट करना और उनको गाइड करना वहाँ पे कितना चैलेंजिंग था या कितना फन था? देखिए, जुबिन पाजी की साइड से तो इट वाज क्वाइट इजी, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी लेट्स गो टू लद्दाख चले है ना। आई वाज द वन की ठीक है, क्रू इतना बड़ा होगा, कैसे हैंडल करेंगे वहाँ, और जो वो लद्दाख के आप लैंडस्केप देख रहे हैं ना, वो इतने नजदीक नहीं है, वहाँ से 4-5 घंटे ड्राइव है, एंड देयर आर नो होटल्स, है ना। तो इन्हें ये तो रेडी थे कि आप आज लेट्स डू इट। खाली जो चैलेंज था कि आर्टिस्ट बाकी कैसे परफॉर्म करेंगे इतनी ठंड में, क्योंकि आप ज्यादा लेयरिंग भी करते हैं तो लुक आउट होती है ना। देन वहाँ पे इनका पार्ट आता है जहाँ पे डेडिकेशन के साथ सुबह उठना, क्योंकि जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे शूट कर रहे होते हो, देन आर्टिस्ट से वो चीज़ें निकलवानी, अगर आर्टिस्ट डेडिकेटेड नहीं है तो आई थिंक वो बहुत
दिक्कत हो जाती है। बाकी चैलेंजेस तो रहते हैं, आप आउटस्कर्ट्स पे जाके शूट कर रहे हैं, बट वो ट्यूनिंग टीम का, कोर टीम का मतलब वो डेडिकेशन, आई थिंक वही ये चीज़ पॉसिबल कर सकता है, वरना बहुत शूट होते हैं लद्दाख देखेंगे अपने। बट जुबिन हियर सर सबसे पहले तो गाना बहुत बढ़िया बनाया सर, थैंक यू। मजा आ गया सुन। थैंक तो यू। क्यों ना थोड़ी सी हमको कंपोजर के बारे में बात की जाए। वो है नहीं है, बात दूसरी है, उनके कितने टाइम में अपने गाना बनाया? सर तो बेसिकली मैं और रॉकी खन्ना हम लोग साथ में म्यूज़िक करते हैं। वो एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हैं। उन्होंने एक गाना लिखा है, गुंचा कोई तेरे नाम कर दिया, साकी ने नाम भर दिया। और हम लोग का पहला गाना जो हम लोग ने साथ में रिलीज़ करा था वो था हमनवा मेरे, जिसको आप लोग ने बहुत प्यार दिया। मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो भी था। अब वो बड़े भाई भी हैं मेरे और मैनेजर भी हैं, तो बड़े भाई होने के नाते और इस गाने के साथ मेरे साथ कंपोज़र होने के नाते वो यहाँ पर तो उनको आना चाहिए था, पर मैनेजर होने के नाते वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं मेरे साथ, तो वी बीन वेरी वेरी टायर्ड, इसलिए आ नहीं पाए। ये गाना हमने सर 3 से 4 साल पहले बनाया था, लॉकडाउन से भी पहले। और ये सिर्फ एक गिटार और वॉइस पे कुछ चीज़ें थी। जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि वो एक एक चीज़ जब आप मंजिल आपको दिख जाती है अपनी, तो उसके बाद फिर एक एक चीज़ जुड़ती बनती है, फिर कारवां बन जाता है वो, फिर एक पूरा एक हम इवेंचुअली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये गाना एक सोलो सॉन्ग था। हमें नहीं लगता था कि डुएट होगा, ये किसी भी तरह सोचा भी नहीं था एक्चुअली। बट फिर जब योहानी आई और उन्होंने गाया, तो आप अगर गाना सुने तो इनका वॉइस बहुत स्पेशल साउंड कर रहा है इसमें, एज कम्पेयर टू द अदर सॉन्ग। बहुत अलग साउंड कर रहा है, बहुत रॉ साउंड कर रहा है, साउंडिंग सो पर्सनल टू हर। और हम मुझको और रॉकी को हमको ऐसा लगता है कि जब भी कोई सिंगर अगर किसी गाने में परफॉर्म करे, तो उसकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सामने अगर सुनाई दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जो एक्चुअल परफेक्शन है उस पर तो खैर हमें गैजेट्स और इक्विपमेंट्स भी लेके जाते हैं, लेकिन जो एक सिंगर की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो कैप्चर करना मुझे लगता है इसकी खूबसूरती है। और फिर या इन्होंने डब करा, जब गाना रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद हम लोग ने, मैंने और रॉकी भाई ने भुट्टरबाजी को गाना भेजा। भुट्टरबाजी ने बोला कि ये तो कुछ ट्रैवल वीडियो लगता है और इसमें हमको कुछ अलग करना चाहिए, वी शुड नॉट शूट लाइक, मतलब इसमें स्टोरी पे ज़्यादा जोर ना दे करके उसकी एग्जीक्यूशन पे जोर देना चाहिए, उसके विजुअल पे जोर देना चाहिए हमको। स्टोरी है उसमें, कुछ है कि कुछ लोग मिल रहे हैं बिछड़ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हाउ दे आर ट्रैवलिंग लाइफ टुगेदर, यू नो। मतलब इट इज़ ऑल्सो लाइक अ लेसन फॉर लाइफ दिस वीडियो, कि हम लोग को जिंदगी के ना जो अच्छे पल हैं उनको याद रख करके आगे बढ़ना चाहिए, rather than thinking of the sad ones, and that's what the video signifies. And I think it's a beautiful song. I really love the song. Yes. And being a part of this song, it is so special, and we are missing the composer. We are missing Rocky Bhai here. He's the writer of the song, and I think he's watching us right now from from Bombay, and he's probably enjoying this. Thank you. And Yohini, Because I think that's my immediate objective kind of thing. पर इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, अभी तो खैर इनसे मैं 2 महीने से वाकिफ़ हूँ सर, पर लड़की में जज्बात है, जुनून है कि मतलब कर गुजरना है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बाद में इंटरव्यू देख के समझ में आएगा, जब कोई समझाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर इसके अंदर जज्बात है, इसके अंदर जुनून है कि मैं करना चाहती हूँ। वहीं से शायद मैं रिलेट भी कर पाता हूँ इससे। कुछ जब मैंने शुरू करी थी अपनी जर्नी, मेरे अंदर भी बस जज्बात ही था सिर्फ, और कुछ था नहीं। जज्बात था कि हाँ करना है, कैसे होगा ये पता नहीं था, बट हाँ जज्बात जरूर था। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये कर लेगी शायद। I need subtitles. You definitely need subtitles. But hopefully in a couple of months I'll be able to do it better, I think. So I'm just going to give myself some time to learn more and explore more. जुबिन जी, ये वो ये दिस साइड, जुबिन जी यहाँ पे, सर यहाँ पे। Yes sir. सर आई जस्ट वांटेड टू, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मतलब कि आपने सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है और कई सारे रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं इसमें जी। तो मतलब कि आप क्या एक मैं मानता हूँ कि एक्टिंग बहुत कठिन काम है,
और उसके लिए अलग परिश्रम है, अलग जर्नी है उसके लिए। आज मैं संगीतकार इसलिए बन पाया क्योंकि सालों से इसमें परिश्रम करा है मैंने, मेहनत करी है इसमें। तो जस्ट क्योंकि आज मुझे जनता देखना चाहती है तो मैं म्यूजिक वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत अपनी एक्टिंग की कला दिखा सकता हूँ, बट फिल्म करना एक अलग ही चीज़ है, उसके लिए एक अलग तैयारी है और उसके लिए मैं इस वक्त डेफिनेटली तैयार नहीं हूँ। मैं भी आने वाले वक्त में अगर कभी ऐसा लगा कि कुछ संगीत के अराउंड कुछ हो रहा है और मुझे लगा कि मैं निभा पाऊँ, बट हाँ कभी भी कुछ करूँगा ऐसा करूँगा जो निभा पाऊँ, वरना नहीं करूँगा। थैंक यू। All right, एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए for giving up such amazing questions and once again please give it up for the crew यार। काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्सेस आए यहाँ पर। ओके सो नाउ एक चीज तो मैं भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब से हम सब लोगों ने गाना सुनना शुरू किया है, कोई भी किसी ना किसी कोने में लाइक यू नो उनकी बॉडी अपने आप ग्रो कर रही है। यू डोंट इवन हैव टू लाइक यू नो कि ट्राई टू ग्रो ये वो वगैरह। सो द वाइब इज अमेजिंग टुडे, हैज बीन अमेजिंग सो फार, बट नाउ दैट यू गाइस आर हियर, ऐसे लाइक मेरे लिए भी ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आई सी यू परफॉर्म लाइव एंड एवरीवन हियर, डू वी वांट टू सी देम परफॉर्म हियर लाइव टुडे? यस। So for that, right now all we can do is you guys can hit the bar, grab your drinks and come back while the time is set up, and then we are going to start with the live performance here. Okay, thank you so much. Once again, please give it up for the crew. Yes? ऐसा कुछ? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ महफिल जमने वाली है। बहुत ही खूबसूरत महफिल जमेगी आज यहाँ तो। Thank you. And we have 10 more minutes. Yes? And yes, you guys can put pictures and then we are going to start. Yes. हाँ भाई। Is it okay with both of us? Alright, this one's a Sinhalese song and it's called Itin Adare, which means so love. Itin Adare
ලලිත් සාගරේ පවා හඳමින් වසන්තයම සොයා ඇවිදින් බලා ඉන්නම් නුඹේ අස්තමින් අනන්තය දැන් අහිංසක මං හදා වැටමින් දරා ඉන්නම් කළුවර රැට නුඹගෙන ගින්දර ඇවිලෙන මගේ සයනේ උඩම වැතිරෙන ලියන රැස් අලුවේ වේදනා ඉතින් ආදරේ පතාල ගැබුනේ ඔබේ නමින් සිතින් වේදනා විඳින් නියදුනේ එදත් මාර්තේ වගේ සරවුනේ ඔබේ වදන් ලලිත් සාගරේ පවා හඳමින් අරන් ඇවිත් අදත් බලෙන් නුඹේ අයිතිවාසිකම් රංගනේ අවසන් නොවේ පාළුවේ එළි වෙන පැයේ අනුවෙන් ආදරේ දාමත් කිසේ කෙලෙසද මේ පවරයෙන් ගෙවෙන්නේ දරදඬුකම් තවමත් ඉවසන්නේ නුඹ මගේ කටුවක් උලයි රැක්කේ වේදංග මඩලේ අපි අතරේ ගැටුනේ ජීවිතේ නෑ පසුතැවුනේ මග හැරුනේ ආදරේ ඉතින් ආදරේ පතාල ගැහුනේ ඔබේ නමින් සිතින් වේදනා විඳින් නියදුනේ එදත් මාර්තේ වගේ සැලවුනේ ඔබේ වදන් ලලිත් සාගරේ පවා හඳමින් Thank you. नहीं मेरी शाम की सिर्फ आएगी ले ले मुझे बाहों में रात सजल जाएगी सोचा नहीं कभी कि तू पास चली आएगी होता नहीं यकीन मगर जान निकल जाएगी हाले हाले दिल ये मेरा होने लगा है ये तेरा जरा जरा मेरी तरह तू भी मुझे जगना मुझे प्यार है तुमसे तुझ में ही तो मेरा जहां मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा कितना लाग मैं तेरा गुरु में बदलेगा प्रियनारी मनहारी सुकुमारी प्रियतमा अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा बिछड़ के वो मिलते सांसें थम जाए जो तू सामने आए देखो जिधर भी देखो मैं तुझको क्यों खुशबू से क्यों आई जो तू सामने आए क्यों तो मुझ में क्यों है बसता यूं तू बता दे और क्यों तेरी रूह है रूबरू मुझसे तू बता दे ये नैनों के नाते मिलकर बन जाते क्यों जुनून जगाए जो तू सामने आए तू सामने आए तू सामने आए
थँक्यू Mind blowing. Mast. Awesome.